So, hi guys, Chirag Jatik this side, and I welcome you all to this amazing series of podcasts wherein आज का जो podcast है हमारा is with the pronoun names in hotel industry, that is Mr. Gautam Anand sir, जिन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ and जब भी मुझे guidance चाहिए होती तो I always remember his name. The first name I remember is Mr. Gautam Anand sir. So, sir, over to you. Chirag, thank you for inviting me to speak to your generation. Very often I do speak at the various colleges to tell them about the reality जो हकीकत है हिंदुस्तान की और मुझे एक बहुत पुराना कपलेट याद आता है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ. मेरा नहीं है लेकिन मुझे पसंद है और उसको कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम सिर्फ शाम ही तो है. तो उसका मतलब ये है that the heart is not hopeless, it's only helpless. और लंबी है गम की शाम मतलब कि अगर आपकी शाम में कुछ गम है तो ये आप याद रखिए वो शाम ही है, सुबह तो होगी. कहते हैं कि कब जो सूरज जो होता है वो यहाँ या उभरता है, कहीं डूबता है, लेकिन कहीं और फिर खिल जाता है. तो यू शुड बी लाइक द सन. सो द ग्रेविटास दैट यंग पीपल शुड हैव इज लाइक द सन. जो जापान में शुरुआत होती है उसकी और उसका अंत भी किसी अलास्का में या जहाँ कहीं जाके साइबेरिया में होता है, लेकिन वो इट्स अवेलेबल 24/7. तो सनलाइट जैसे ही होना चाहिए. और आज के हिंदुस्तान में तो ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दैट ये जो हमने कपल कहा है उसकी वैसी जरूरत ही नहीं है. लेकिन आई फाइंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल गेट डिमोटिवेटेड because very often they are not able to follow their dreams or their aspirations. And so if you look at my sector, so I'm a hospitality professional, but I've done my MBA in services, which means that the core of change, जो core of growth जो है वो सर्विस सेक्टर में ही है. अगर आप टेक्नोक्रेट हैं, आप टेक्निकल हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग IIT या IIM कर लेते हैं उनका जो वजूद होता है वो किसी अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है. Everybody wants to go abroad. In fact, I don't know whether you know, but we've had 60,000 immigrant requests that have come from Europe and America over the last couple of months, largely because they believe they get a better quality of life. और दूसरा जो हम एक काफी आर्ग्यूमेंट सुनते हैं from people of your generation कि they want quality of life, कि ये जो लाइफस्टाइल है जो 12-12, 14-14 घंटे काम करवाते हैं तो उसमें ट्रेड ऑफ तो होगा ही, ठीक है. और किसी शुरुआत में चाहे आप चीन में हो या जापान में हो या अमेरिका में हो या यूरोप में हैं, वो ट्रेड ऑफ तो होगा ही, यू नो. सो लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, बट आप अब याद रखिए अगर आप न्यूयॉर्क में काम करते हैं और आप वेस्टचेस्टर में रहते हैं तो आपको 4-5 घंटे रखते हैं कम्यूट में. तो आप अगर आप डाउनटाउन में काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में और अगर आप वेस्टचेस्टर काउंटी में रह रहे हैं और तो आपको 4-5 घंटे तो आपके वैसे ही व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है. एंड आई थिंक मोर एंड मोर इंडियन कॉर्पोरेशंस आर लुकिंग एट अ 5-day week. So I don't think there should be any remorse, ठीक है ना. So हिंदुस्तान में अगर आप देखें इंडिया GDP numbers are good. They're the 5th in the world as far as the GDP is concerned, and the 40-50% of that contribution has come from the service sector. Okay, so those of us who are not technocrats, who haven't done their engineering or are not inclined towards information technology in terms of making a career out of it, please join the bandwagon of the Indian service sector, which is growing exponentially, and that is where growth will come. So whether it's with the manufacturing of cars, or whether it's insurance or banking or private sector or wherever else you work, जब तक आप सर्विस नहीं समझेंगे आपकी जिंदगी व्यस्त है,
और आजकल तो आप राइट। सुनते हैं कि इतना बड़ा उदाहरण दिया जाता है, अतिथि देव भव जो कहते हैं, वो खाली होटल्स के लिए नहीं होता। वो तो जैसे अगर हम चिराग के घर जाएंगे, उसके पेरेंट्स के साथ मिलेंगे वहाँ पंडी में, तो वो भी हमारा इस्तकबाल करेंगे, हमें कुछ नाश्ता पानी देंगे। तो ये तो एक Definitely, इंडियन sir. I ट्रेडिशन है, would love. इंडियन ट्रेडिशन है। तो this is what the truth is. And I think the biggest crisis facing us today, Chirag, apart from the damn COVID, which never seems to stop, is the climate crisis. And therefore, sustainability and gender equality and those are the issues that you have to confront with, all right? And diversity. अब ये Yes. कहा जाए कि भी चिराग को नौकरी मिलेगी, गौतम आनंद को नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसका एग्जांपल है। एक और शेर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पैमाने में कुछ और, पैमाना मीन्स ग्लास, ओके, Glass. मेरे Right. पैमाने में कुछ और, चिराग के पैमाने में कुछ और, देखे साखिया होना जाए तेरे मैखाने में कुछ और। सो अरे वाह सर, क्या बात है। सोशल चेंज जो है ये हैव्स और हैव नॉट्स का होगा, ठीक है। और कहा जाता है Yes. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, जो अमीर है वो अमीर ही होते जाते हैं, जो गरीब है वो गरीब ही होते जाते हैं। लेकिन ये सही बात नहीं है। अब आप देखें, दी व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर वाज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि ऊपर से शुरू हुआ था वो नीचे तक पहुंचता था। अब वो बॉटम अप अप्रोच है, last 4, 5, 6, 7 years, the bottom approach. So it is estimated that 670 million Indians will join the middle class over the next couple of years. 670 million Indian people will join the middle class. Number one. Number two, 25% of the working force in the world will be people of your generation. 25% of the working force, not just in India, globally, is going to be, Indians like Chirag. So you have reasons to rejoice, but that does not mean that you shortchange your education. The core of India's strength. मेरे जो parents थे वो 1948 में लाहौर से आए थे. They were teenagers. और उन्होंने, I was born in 1958. जब तक वो आए, उन्होंने अपनी नौकरियां कर ली, गाड़ी खरीद ली, मुझे मॉडर्न स्कूल भेज दिया जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ। और याद रखो कि वो कहाँ से आए और कहाँ रेफ्यूजी बन के आए थे, लेकिन what held them in very good stead was education. They were both educated. My father was an engineer, my mother was an educator, and they both decided कि हमारा जो भी हमारा बच्चा होगा या बच्ची होगी, पहला उस मकसद होगा उसको एजुकेट करना। तो उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस देके हमें दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में भेजा, सेंट स्टीवंस कॉलेज में भेजा। I went to the University of Washington in Seattle, thanks to the strength of my parents and their core responsibility of putting money behind me, and I paid back. Okay, so that investment worked very well. Now, for you are an educated person, your parents sacrificed, and I know that you have humility, but उन्होंने भी sacrifice करे, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया. So I think the core of the great Indian psyche, जो इंडियन एक्सपेरिमेंट है, जो हिंदुस्तान, जो अपने आइडिया ऑफ इंडिया हम कहते हैं, इसका बेसिस क्या है? एक तो डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के मजहब, और उसी में हमारी एक यूनिकनेस है। और जब तक आप, द कोर ऑफ एवरी पेरेंट sacrifices for their children, whether they're, and if you are discriminating based on gender, then they're making a mistake. Because diversity के बगैर कुछ नहीं होगा. Can you imagine if we employ more women in our field, how the growth will be super exponential? If women join the workforce, Chirag, वही हम गोवा में समझा रहे थे सबको. गोवा में HPS का सेमिनार था, and there was a debate. And I asked them, I said, it's all very well कि भी हमने ये कर लिया, वो पैसे बना ली, इतना रिटर्न दे दिया. I said, we have to remember that there is something known as a triple bottom line. ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब ये हुआ कि नेचुरली प्रॉफिट, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो प्रॉफिट तो मांगेगी,
दूसरा है एग्जैक्टली। पीपल। अब पीपल में दो तरह के पीपल होते हैं, एक इंटरनल कस्टमर और एक एक्सटर्नल कस्टमर। अगर आप मुलाजिम हैं हमारे जैसे, हम इंटरनल कस्टमर हैं। जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे पब्लिक है, जो हमारा पब्लिक इंटरेक्शन है, चाहे वो सर्वेयर्स हों, सप्लायर्स हों, वो is called what I call, this is what I call the cast of character, people. And the third and the most important thing is the planet. So in the pursuit of our business, in the pursuit of our people, have we sacrificed the need of the planet? And उसमें है हमारा ही महात्मा गांधी जो थे, the great Mahatma Gandhi, he was, I think, the first environmentalist in the world because he propagated something known as Swaraj and Swadeshi. ये जो हमारी स्वदेशी का मतलब ये हुआ, be Indian, eat Indian, use Indian, produce Indian. And I think जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है, चाहे वो हिमाचल में या पंजाब में, हरियाणा में, ये thanks to Mr. Gandhi's thinking कि today we are an agricultural surplus state. जो नेशन एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा उसकी तो बल्ले ही बल्ले, बिकॉज आप देखिए क्या हो रहा है कि अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी कि रशियन शिप डॉकिंग इन ट्यूटिकरन, इंपोर्टिंग व्हीट फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में शॉर्टेज है तो रशियन शिप आई है, इंडियन पोर्ट में आई है, गेहूं हमारा अब वो पाकिस्तान वापस जाएगी। ये तो हाल है, आई एम जस्ट सेइंग दैट इंडिया हैज द सरप्लस। और याद रखिए, जिस देश में, जिस मुल्क में चावल, गेहूं एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी कॉल एज कैश क्रॉप्स सरप्लसेस रहेंगे, वो तो विल बिकम द ग्रेट, सो द नेक्स्ट ग्रेट वॉर is going to be the war of hunger and the inability to produce. अब देखो क्या हो गया, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में दोनों की व्हीट फील्ड्स खत्म हो गए। So we may be surreptitiously getting our oil from Russia, but not all the other nations who are dependent on Russian wheat. हाँ, बोलो, कुछ कह रहे थे। दिवान सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, दैट इज we are now living in something जो आपकी we're looking in something known as the Republic of Technology. Republic of Technology का मतलब ये है that we are intertwined with each other through technology. तो अब किसी ने वहाँ युद्ध कर लिया रशिया और यूक्रेन में, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट सब जगह हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रवैया है दुनिया का। तो आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, और चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे ना हो, लेकिन कुछ स्पेशलिटी तो करनी ही होगी। सब तो आईआईटी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सब तो मतलब सर ये चीज तो मैं भी लेकिन सर, मतलब ये चीज मैं यस सर, मैं वही चीज कह रहा था कि ये चीज तो मैं भी बहुत ज्यादा। So what is your age group doing? What are they thinking of doing? They all want to become entrepreneurs? आज के वक्त में अगर देखा जाए सर, तो मतलब काफी लोग ऐसे हैं जो एक क्रेज चल रहा है, एक क्रेज चल रहा है दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। एंड सर उसका एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रेदर देन अ स्टार्टअप, तो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग कोट पहन लेते हैं एंड वो चीज हम सोचते हैं, एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप लिखना बहुत इजी है, बट गोइंग इनटू दैट फील्ड इज समथिंग जो एक you should have ignite about. नहीं, ठीक है, it's a very, I mean, we are a nation of entrepreneurs after all. 1 billion, how many, 600 million people are self-employed. Unfortunately, there are, in the what they call as the informal sector, जो चाय बेच रहा है, कोई पान की दुकान खोल के बैठा है, कोई ढाबे में है, what we call as informal sector, so ये नहीं। आप देखिए, याद रखिए, अगर आपके 1.5 बिलियन पीपल हैं, तो सुबह जो उठते हैं तो 1 बिलियन चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आप देखिए, इफ यू एटमाइज द प्रोडक्शन ऑफ टी, उसमें चाय की पत्ती जाती है, दूध जाता है, चीनी जाती है, ग्लास जाता है, कप जाता है, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट्स अगर आप ब्रेकअप करें, तो ये जस्ट इमेजिन द रेवोल्यूशन दैट इंडिया क्रिएट्स एवरी मॉर्निंग। सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे से 10 बजे तक
इंडिया चाय पी रही है, जब 1.5 बिलियन Yes. पीपल चाय और कॉफी पी रहे हैं, उसी में देखो कंजम्पशन क्या होती है, यू नो. And we are Yes. grateful So to देवांग सर मतलब Mr. Korean for giving us the milk revolution. यस सर. कहो, देवांग सर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर. मैं सबसे you पहले तो wanted to say आपसे ये something. जानना चिराग चाहूंगा जो पूछ. आपकी जर्नी. यस 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 एग्जैक्टली. एम आई ऑडिबल राइट नाउ? एम आई ऑडिबल टू यू सर? Yeah, I can hear you. Yeah. यस. सो आई जस्ट वांटेड टू नो सर जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम फ्रॉम लाइक You're आपने आपने cracking up. जैसे कहा कि आपके. मेरी नहीं, आवाज आ देखिए रही है अभी हमारे साथ क्लियरली? तो ऐसा हुआ. हमारा, I joined ITC in 19. Can you hear me now? Can you hear me? Am I audible? यस 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 एग्जैक्टली. यू ऑडिबल. Okay. I joined ITC in 1981 and I worked all the way till I was 62. Okay. I had just one ओके. job, one life, one focus, and I grew from being a management trainee to executive vice president and member of the divisional management committee. Okay. So I've done a diverse amount of jobs. I have lived in and worked in Delhi. I worked in Hyderabad. I worked in Madras. I worked in Bangalore. I worked in Goa. I worked with the Sheraton in Hong Kong, San Francisco, Bangkok, Singapore. But I have stuck to one company. And then the company sent me on a formal MBA extension program to Cornell. I did that. I was a part of the Make in India program. I headed Make in India with the government on a private public partnership. I've done Make in India in most major cities of the world. I've also headed Experience in their society where we've taken Indian cuisine all over the world capital. दुनिया घूमे हैं हम सेंट पीटर्स गए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग गए हैं, लास वेगस गए हैं, जापान गए हैं, तो बहुत घूमे हैं. डेवोस हम हर साल जाते रहे हैं 5 साल. जब इंडिया वहाँ इंडियन अड्डा होता था उसको हमने संभाला है. तो opportunities तो मिलेंगी. Okay. And so I've traveled the world. Okay. The only country that I have not traveled is Australia. For some reason they haven't been to Australia, but otherwise I've covered North America, Europe, Africa, Latin America, most of India, and all thanks to my job in the hotel business. Okay. So दैट्स we रियली have वेरी ग्रेट सर. taken the रियली वेरी Indian ग्रेट. flag everywhere. दैट्स रियली ग्रेट. सो लाइक So लाइक whether it आपकी was it जर्नी जो easy, रही है सर well, होटल इंडस्ट्री में. भाई देखिए ऐसा होता है चिराग. hotels are derived demand from the economy. समझ गए आप? We are the अमेरिका में कहा जाता है कि the economy resonates by the sale of hamburgers and by hotel occupancy. जितना हैमबर्गर का सेल होगा, जितनी होटल ऑक्यूपेंसी होगी, वो बैरोमीटर ऑफ अमेरिका बिजनेस है. हिंदुस्तान में होटल्स की जो है वी आर अ डिराइव डिमांड. तो अपनी डिमांड तो होती नहीं है कि हम खुद जाके रहेंगे, हम तो डिराइव करते हैं. जैसे इकोनॉमी फ्लरिश करेगी वैसे होटल बिजनेस विल डू वेल. और आई कांट कॉल इट, जैसे आपको एग्जांपल दिया, जितनी चाय बिकेंगी, हैमबर्गर तो हम इतना खाते नहीं, लेकिन चाय तो बहुत पीते हैं या कॉफी बहुत पीते हैं. तो जितनी चाय बिकेगी, यस. जितनी कॉफी बिकेगी, वैसे ही. और होटल ऑक्यूपेंसी जब आप देखिए, उस दिन हमारे दोस्त, अजीज दोस्त थे, उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने हमें कहा भी आप हमें हेल्प कीजिए उदयपुर में कमरे के लिए. तो 65,000 रुपीज का 1 नाइट का कमरा मिल रहा है उदयपुर शहर में. और अब आप देखिए, अंदाज लगा सकते हैं कि जब 65,000 रुपीज का, जो कि हद से बाहर, obviously there is demand, na? यस. So now remember that, as I told you, that यस. hotels are a barometer of hotel economy, and we derive demand from that. That means there are enough people traveling to Udaipur so that the price of hotel room is 65,000 rupees. You know, so today your hotel rival with the best in the world. The Continental Traveler Award, which used to give only awards to America, then only to Europe, then only to Southeast Asia, now only gives awards to India, because some of the world's best hotels are in India. Okay. And we should be proud of it. From our own home यस. state, your and my state,
whether it's the Wildflower Hall in Mashobra or the Cecil in Simla. And today, Dharamshala has so many hotels, and the flights are full. The flight to Dharamshala and hotel occupancies are absolutely full. There is no room. And every single brand is represented in the valley, Kangra, Dharamshala Valley, etc., etc. I try Exactly, to sir. get some friends अब आप कन्याकुमारी जाना चाहें वहां भी कमरा नहीं है, मदुरई जाए वहां भी कमरा नहीं है, शिलोंग में जाए तो वहां भी कमरा नहीं है, अभी मैं गोवा से आया वहां भी कमरा नहीं है, तो आई एम सेइंग कहीं कमरा ही नहीं है, so obviously the hotel business has an inflection point. वो ऐसा inflection point पे है कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, and I foresee that unless it's like the airline business, we are saying jet airlines को वापस आइए so that the price comes down, because अब आप देखिए, if you travel, हम अमृतसर जा रहे हैं for somebody's 70th birthday, or I won't name the airline, but the ticket to and fro is about 55,000 rupees. Delhi, Amritsar, Amritsar, Delhi. So we are hoping that more hotels come in. We are hoping that more investment, and everybody's capital investments are full. मतलब अगर आप capital outlay देखें, apart from the government of India, if you look at the private sector and the capital outlays, the capital people are willing. The companies are all portraying more and more capital into the Indian economy. जितनी कैपिटल आप लगाएंगे उतना आपको उसका and we are still a people business. Okay, technology can only come in to overcome human error. Technology important है to overcome human error, because human error बहुत होता है, लेकिन it cannot overcome the human. हाँ बोलो. So I have a question for you, sir, कि मतलब what is the potential for this hotel industries, like अगर last few कुछ टाइम पे देखें तो लॉकडाउन के टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे काफी डाउन चला गया था, and the persons who used to like work in this sector, और काफी सेक्टर डाउन गए भी थे, वो तो यूजुअली सारे सेक्टर गए थे, बट अपकमिंग ग्रोथ कैसे है सर उसमें? कुछ ना कुछ तो जिंदगी में चेक्स एंड बैलेंसेस तो होंगे, ठीक है. नेचुरल डिजास्टर हुआ, अब जैसे टर्की में क्या भूकंप आया, पाकिस्तान में इतने सारे अनयूजुअल रेन्स आए, तो नेचुरल डिजास्टर्स एंड दीज चेंजेस विल हैपन. एंड कोविड जो था, ये इट्स लाइक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. पहले वो स्पेनिश फ्लू हुआ, कोविड में अब उसमें क्या हुआ कि a lot of people lost jobs and they lost hope. तभी तो आपको हमने वो कपड़े बताया कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है. So I understand the sacrifices that people have made during the COVID, but good companies retained their employees. They may not have paid them, not given them increment, but good companies, at least the company that I work for, retained all their employees. Some companies did not retain their employees, okay? And some people have not come back to the workforce. But I'm saying... Yes, continue. Speak slowly. Bolo. I can't hear you. I think you have to speak slowly. Okay. So I was asking कि जो students अभी they are into this service sector and they want to be in this service sector, तो next decade या फिर next 10 years कैसे होने वाले उनके लिए? Plus there are a lot more students जो चाहते हैं कि they want to start their business into this food sector, फूड इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, and they want to build some startups in this. तो what all advices you want to give to them, because क्योंकि आपने पूरा ग्लोब ऑलमोस्ट आपने कवर कर रखा है and you have been to every country almost, तो आपकी क्या एडवाइसेस रहेंगी उन यंगस्टर्स के लिए? आई थिंक इट्स, देखिए ऐसा है, फूड एंड बेवरेज का जो बिजनेस है वो तो टाइमलेस है, टिल द एंड ऑफ टाइम आदमी या महिला खाएगी और पिएगी, कुछ ना कुछ तो पिएगी, तो वो तो टाइमलेस है. यही है कि उसके लिए भी आपको, उसके लिए ये अब वो घरेलू जो काम है कि भी हम घर में खाना, बहुत प्रोफेशनल है. कलनरी साइंस बहुत प्रोफेशनलाइज हो चुकी है, और उसमें आप देखें कि FSSAI जो है, जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसके कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग और इन्फोर्सेबल हैं. सो जैसे USFT है, हमारा FSSAI है. सो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो साइंस ऑफ फूड जो नहीं जानेगा वो फूड नहीं बना पाएगा.
बिकॉज खाना जो है वो So you हाथ से told नहीं like बनता, science of वो food. आंखों से बनता है, वो प्रोपोर्शन से बनता है, वो So प्रोसेस से बनता है, वो दिल से नहीं बनता। पहले कहते थे मैं दिल तो बनाया, मैं इसमें किता वो किता वो किता, दिल से खाना नहीं बनता, यू नो। सो I'm saying that you should work with your heart, but today you can't work with your mind. It has to have a combination of the mind and the heart. It's a great business to be in, but it's a very competitive business. And your biggest hurdle today is rentals. You know, so if young people want to start, let's say a cafe or a restaurant or or something, they have to pay a lot of money for rent. 30-40% of their P&L will go into rentals. Okay, and or yes, you can say, okay, I'll have a cloud kitchen. Follow the Domino's, what the Domino's format. Domino's format was what? Domino's format was that we will establish our kitchens in low density areas where the rental costs are almost negligible, and we will deliver. So remember that Domino's started 50, 60 years ago. So what your aggregators are doing today, your Zomato, Swiggy, etc., are also doing the same thing. They're actually following the Domino's principle, right? But uh, if अगर आपके जनरेशन चाहती है कि वो इंटरेक्ट करें और मतलब कि वो लोगों से मिलें और उनसे वार्तालाप हो, उनके कमेंट है, तो फिर तो कैफेज रेस्टोरेंट तो गुड, बट दे प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव बिकॉज उसके बहुत बैरियर्स हैं। एक तो आपको दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलने के लिए 100 लाइसेंसेस चाहिए। अब आप देखिए साइकिल क्या हो रहा है कि वहां पर कोई लिकर नहीं है, कोई लिकर चाहता है, कोई लिकर नहीं चाहता। तो ये हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है। दुनिया से कहा जा रहा है कि भी आप वेजिटेरियन हो जाएं, लोगों से कहा जा रहा है कि आप वाइन ना पीजिए, लोगों को कहा जा रहा है कि नवरात्रों में ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बहुत रेगुलेटेड बिजनेस है, and a lot of people get frustrated with all this over regulation. I'm talking about Delhi. I'm not saying that it's happening everywhere in the country, but in Delhi at least there has been a certain amount of discontent. Now, but in life, food and beverage तो मतलब कि खाना और पीना तो एक हमारे साइकी में है, तो whether we like it or not, and I don't think anybody has any business to tell me कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत। मैं it's like our preference. This is what I think sometimes goes wrong with India, that we interfere too much in the we become too intrusive in your life and my life कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। I don't think we should be very curious about my likes or dislikes. So it's a difficult business to be in. It's highly yes, regulated, and COVID is just an expression. But I think uh, the main problem for young people today is going to be how to deal with the establishment. With an establishment. overworked uh, uh, overworked establishment who wants to enforce everything. Okay, and yet for some reason, but there are successes that have come, and if you have the staying power, then you will do well. Lots of restaurants closed down during COVID because largely because उनका जो rental था वो इतना high था, and their staff costs were so high that they had to let people go. So अब So, कोविड होगा, yes. फिर हो जाएगा, नहीं होगा, how can I say? But हाँ बोलो। सर दिवान सर, मतलब आपने ये एक तो एक होगा लाइन यार, दीज कही आर दैट वेरीज ऑफ वाज नेचर। वेरी। नेचर तो आएगी, कल भूकंप आएगा, कुछ यस, होगा, इट कुछ इज ना इट कुछ तो इज होगा। तो उसके लिए यस, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, लेकिन आई एम सेइंग आप, और इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई नाउ, सो व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, your EMIs are going to be much higher than what they were before the COVID, right? अब आप देखिए सेविंग्स के भी यस, 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है अगर आप कुछ लेना चाहें तो, तो यस, I would suggest that अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग हो, अपनी डेट में मत जाएं, कीप योर कैश फ्लो सिंपल, हायर मोर विमेन। समबडी आस्क्ड मी रीजनल कुजीन का क्या फ्यूचर है। मैं कहा आप देखिए, अगर हाउसवाइफ हैं और उनके पास उनको if they can supply the food to you, right, and she or he can make the food in their home as long as they're regulated under the FSSAI, I will not hesitate, because that is what the future is. The future is going to be not have full-time employees,
because I think first of all the employees themselves feel scared कि यार ये निकाल देगा हमें कल दबा हुआ है. तो I think it's important to look at more and more housewives to produce and give you a certain appropriate portions of food, and then run your restaurant or your delivery chain rather than make these expensive restaurants, glamorize them, and establishment costs are very, very high. So you have to be very careful, especially in tier one cities. Now, for instance, I would open something in Mandi. Yes. अगर मैं चिराग होता, I would have loved to open something in Mandi. I would have loved Village. to open something in Simla, or outskirts of Simla, where or Himachal somewhere, or maybe Dharamsala as well, you know, because I think costs there are much lower. Am I right? So Yes. go back to your roots. Go back to So what you the call answer, as matlab, the yes. kitchens of. Yes, I कहो. want to ask you one thing, like जैसे कि आपने एक साइंस ऑफ फूड कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि साइंस ऑफ फूड क्या है वो ज्यादा मैटर करता है. एंड तो आई जस्ट So I'll give वांटेड टू नो you. कि I'll जो पर्सन शायद इस इंडस्ट्री से नहीं है एंड शायद जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो व्हाट डू यू मीन बहुत सिंपल टर्म्स में साइंस ऑफ फूड क्या हो सकता नहीं, है? I think नहीं, अगर देखो यार, हर चीज के लिए एट्रीब्यूट चाहिए. मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूँ. छोटा सा एग्जांपल है. सारी दुनिया खाती है, दाल मखनी खाती है, राइट? आप भी खाते हो दाल मखनी? एग्जैक्टली. अब आई लव उसमें इट. मक्खन नहीं होता. मक्खन का मतलब होता है विस्कोसिटी. जो माँ की दाल होती है उसपे यस. विस्कोसिटी होती है, और विस्कोसिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेक्सचर ऑफ द दाल. अब उसको 6-8 घंटे लगते हैं पकने में. आप जो मर्जी करो, उसको प्रेशर करो, मारो, कूटो, गालियां दो, लेकिन वो विस्कोसिटी जब तक नहीं आएगी वो दाल मखनी नहीं बनेगी. मखनी इज अ मेटाफॉर फॉर विस्कोसिटी. हाँ, वो और बात है कि कई लोग मक्खन डाल देते हैं, मलाई डाल देते हैं. तो जब तक आप साइंस नहीं समझेंगे खाने की, और उसका ट्रिक होता है पानी, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए. तो आपको थोड़ा बहुत तो स्किल लेना ही पड़ेगा, चाहे वो क्राफ्ट कोर्स ही ना करना पड़े या ऑनलाइन कलनरी प्रोग्राम ना करना पड़े, बिकॉज आपको ये कुछ ना कुछ तो एजुकेशन. यही नहीं कि मैं चल भाई फोन मेरा वक्त आ गया, मैं जाके रेस्टोरेंट खोला. दैट वोंट वर्क बिकॉज इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट. हाउसवाइफ्स किचन जो यस. है, दे शुड बी सिटिंग एट होम बीइंग हाउसवाइफ. अगर आप ब्रांड खोलते भी मेरा हाउसवाइफ किचन है, भाई उनको कहिए कि हाउसवाइफ जी तो आप घर में रहो, आप पब्लिक में मत आओ. तो कोई होता है मदर्स किचन, भाई माता जी ने भी यही कहा जी, माता जी तुसी भी घर ही रहो, उत्थे ही पकाओ, ज्यादा इतने ना हो. So all those emotions are dying. It's a very professional attribute outside. I'm not saying that mothers. I love my mother. I'm sure you love your mother. Okay, Yes. and she makes the best food as far as I'm Exactly. concerned. But my mother is not your mother. Your mother is not my mother. So you have to. Unfortunately, we can't follow those नुस्खे. वो नुस्खे होते हैं ना कि भाई छटाक ए डालो जी, हाथ से, अंदाज से, माँ से, प्यो से. नहीं होता भी वो. अंदाज से कुछ नहीं होता. Everything has to be a process. जब तक You mean प्रोसेस to नहीं say होगा. कि यू मीन टू से कि आज के टाइम पे अगर कोई उस साइंस ऑफ फूड को समझना चाहता है, दे कैन स्टार्ट विद दिस क्रैश कोर्स एज वेल. Yeah, I think the other thing is crash course तो कुछ होगा ही नहीं. So I think the best thing is to do a professional program and then get some experience. Without getting some on the job experience, I went for my MBA 10 years later to Cornell, but I had put in 10 years of work experience, and then the company said जा भाई तू MBA भी करा अपना. तो जब तक आपको कुछ एक्सपोजर नहीं, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए. And I think the best way of doing this is to become an internship or an apprentice or become an industrial trainee or work for a company, learn what the attributes are, look at the environment. And the work environment, for instance, I tell you, in my hotel in ITC, अगर आप जमीन से भी खाना खा सकते थे, तो जमीन इतनी साफ होती थी, और उसमें स्वैब टेस्टिंग कराते थे, और उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता था कि रोज स्वैब टेस्ट होते थे, रोज उसकी all the food and people also had to go through the swab test so that they were
clinically correct. Because remember that if I provide infection अगर दे दूं तो सारा होटल ही बंद हो जाए. 1500-1600 दिन के लोग खाते हैं. Yes. और अगर मैं उस पे अपनी साइंस नहीं लगाऊंगा और मैं हर चीज तुक्के से करूंगा, और मेरा प्रेजर्वेशन और स्टोरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो 1500-1600 लोग तो मतलब घायल हो गए ना. उसमें क्या रेपुटेशन होगा. रेपुटेशन आप सुनते होंगे कभी फूड पॉइजनिंग हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया. तो उसी में यही होता है कि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे साइंस को. और उसमें आर्ट भी है, मैं नहीं कह रहा कि आर्ट नहीं है. और बट पाब्लो पिकासो कहते थे कि देखिए जो जो पेंटर होता है वो बेचता है जो उसने बनाया होता है. वो आर्टिस्ट होता है, सॉरी, पेंटर वो होता है that he sells what people want, and an artist is a person who paints what he wants, and people buy it because he is an artist. So you have to decide whether you want to be a painter or an artist. अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो फिर आप वही बनाएंगे जो दुनिया मांग रही है. अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप वो बनाएंगे जो आप चाहते हैं, फिर लोग उसको खरीदेंगे. तो याद रखिए जिंदगी में पुल एंड पुश जरूर होगा. एक पुल होगा, एक पुश होगा. जब तक वो पुल एंड पुश नहीं होगा, Yes. वो आपका बैलेंस शीट का इम्बैलेंस रहेगा. करेक्ट. सो लाइक वन मोर क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा थी, जैसे आपने एक बात कही इंटर्नशिप्स वाली, तो मोर ओवर आज के टाइम पे काफी काफी यंग स्टूडेंट्स है, दे गो इनटू इंटर्नशिप्स, एंड इंटर्नशिप्स में वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा रहता है कि 16 आवर्स वर्क, 14 आवर्स वर्क. तो व्हाट शुड बी द एनवायरनमेंट वेयर इन, मतलब जो एक यंगस्टर को देखना चाहिए कि दिस शुड बी द. बहुत बदतमीजी है भाई. ये 16 आवर वर्क है. दिस इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. I think people who should be persecuted for human injustice. I think that whatever is the protracted work shift as regulated by the company law board, all right, and give an hour or two, or volunteer. If you believe you have the time and you like your job, then you can volunteer. Otherwise, it should be regulated by the corporate, by the Ministry of Corporate Affairs or by the Labor Department. That we are not here to treat people like cattle. All right, we are here to treat people. That is why I told you that the people component in this business is very important. I was hearing Mr. Mehta of HUL, वो बोल रहे थे उस दिन किसी podcast में. He is the managing director of HUL. He said that people are the core of our business. One of the biggest FMCGs in the world still has this belief in people. और अगर वो कंपनी आपको 16 घंटे 17 घंटे काम कराएगी तो वो कंपनी नहीं रहेगी. उसमें ट्रिपल बॉटम लाइन ही नहीं होगी. लोग उसके भाग जाएंगे. So ethical Yes. and humanity requires कि आप अपना वर्कशिप when you join the company should be very clear कि भी चिराग यही आपको काम करना है. अगर जरूरत पड़ी तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि चिराग आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई या प्रेशर ज्यादा है, तो would you contribute? Then if Chirag accepts it, then it's fine. But you can't be forced by because I'm your boss to make you work extra. It doesn't work like that. Anything that works like that is inhumanity. And things have changed over the years. बट सर आज के टाइम पे अगर जनरेशन में देखा जाए तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं सर, मतलब जो बेसिकली जहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा ओवर टाइम होता है, एंड एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू डू समथिंग, वो कर ही नहीं सकते कुछ भी. बट मुझे लगता है कि मतलब अगर ऐसा जैसे आपने बताया मुझे कि कुछ लॉज होते हैं and उसके बेसिस पे जो कंपनी को वो डिसाइड करना चाहिए, यस, बट ड्यू टू द बॉस और द हायर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, एंड द इंटर्न इज बाउंड टू डू दैट. पर अगर हो रहा है तो फिर वो डेमोक्रेसी में मतलब कि उसकी मिसयूज हो रही है. और ये जो I wouldn't work for a company which where the boss dictates the rules and treats me like a slave. This is what the advantage today is. I wouldn't work. I mean, I worked 30 years for ITC, and nobody ever mistreated me. I didn't mistreat anybody. Great. I didn't make them work. So anyway, you should
So you should You have should choose that your company well. Okay, that capability you of should choose your company well. यस यस दैट व्हाट्स मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि आई वांट टू गो इनटू दिस 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 कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है कि इसमें मुझे जाना है बट अगर वहां का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आई थिंक सो यू शुड बी द गुड फिट फॉर द कंपनी एंड कंपनी शुड बी द गुड फिट फॉर यू तो वो ज्यादा मैटर करता है. No, I agree with you that there must be some misuse of the platform. After all, uh, why do we have a villain? हमारी जिंदगी में विलन कहाँ से आता है? एक 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 रावण कहाँ से आता है? जिंदगी में होगा, राम भी होगा, लक्ष्मण भी होगा, सीता भी होगी, रावण भी होगा, वो तो होगा जिंदगी में. But then the option is now with incumbent. आपकी incumbency इतनी strong है, चिराग can take a call कि ठीक है यार मुझसे नहीं हो रहा, I'll work. इतनी opportunities हैं, but that's a choice we all have to make. And you use the social media platform and discredit that company, because that is the power that has been given to Yes. you. I mean, Yes. And if you are misused or mistreated, then go ahead and express yourself. Because if you don't do that, then I think the fundamental Yes. principle of being Indian in this century is lost. अब दबे रहो कि वो यार कुछ नहीं हो रहा, हमको तंग कर रहा है, मार रहा, पीट रहा है. I would walk out of that job, honestly speaking. If I was you, I would have walked out of ITC Yes. many years ago So, if they mistreated me. You understand? yes. What piece of advice you would give to the students or interns जो एक अच्छी organization में जाना चाहते हैं and what are the parameters जो आपको लगता है कि at that point of time जब they are into colleges and university they are studying and they don't have any skill like वो क्या how they should sell themselves companies के लिए ताकि वो आप जैसे ITC के लिए गए थे right for the intern So Chirag, what they should do कि वो इस organization तक जाए. I think a lot of companies have management training programs. A lot of companies still have management training programs, and I think at the entry level, okay, and I think being a graduate is quite an accomplishment. It's not difficult. It's not easy, I know, but it's not difficult. I think a lot of people have those entry-level programs. I know that many hotel companies have different programs to suit different educations and academic background. So don't lose hope. If you're a graduate and you still want to work for a hotel, there are entry levels where you can work your way up. Okay, everybody doesn't have to be a manager. I mean, I didn't start off being a manager. I was just a management trainee. Okay, and what we're getting paid today is not what I was getting paid even when I. So there are a lot of opportunities, I think, and you have to take a call. If you are an entrepreneur, then you should do your own thing, but get some experience in a structured company. If you want to join at the entry level, then be patient because it takes time to climb up the ladder. It's very competitive, and you have an advantage. And I would urge all your friends and family, all your listeners to please अंग्रेजी सीखिए. अंग्रेजी जो है ये बहुत लिंग्वा फ्रांका ऑफ द वर्ल्ड है, और जो हमारा डिविडेंड हम एडवांटेज ले रहे हैं आज हिंदुस्तान का, क्या डिविडेंड है कि हम अंग्रेजी जानते हैं. हम अंग्रेजों से हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी से डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. और अब आप देखिए आज यूके के भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन हैं, और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हैं, और अब वो निकी हेली भी देखिए प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कर रही है. आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हैं, और पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बॉर्न हैं. तो लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो हमारी मातृभाषा जैसे मेरी पंजाबी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने अभी हिंदी सिखवाई और इंग्लिश सिखाई. तो प्लीज गो अहेड एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस कीजिए. और देखिए, याद रखिए, एक तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा प्रैक्टिस होता है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंसी आएगी. और अंग्रेजी अगर आप नहीं जानते हो, आप सीख लीजिए, कुछ अंग्रेजी के बगैर कुछ नहीं होगा. A form of we will keep on trying कि हिंदी ये करिए. I am not, देखिए मैं भी हिंदुस्तानी बोल लेता हूँ,
पंजाबी भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। और और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इतनी भाषाएं बोल लेता हूँ। लेकिन मैंने जो कंडक्ट किया अपने आप को बिजनेस में और इतना ट्रैवल किया वर्ल्ड ओवर में, इट वाज थैंक्स टू इंग्लिश, क्योंकि हम इतना फ्लुएंसी से बोल सकते थे। और तो आई वुड अर्ज यू एंड योर लिसनर्स टू प्लीज स्पेंड टाइम, even if it means listening to BBC every day or taking coaching lessons or practice. And when you are with friends or family, please speak English, because the more English you speak, and I'm not being stupid, that's the way of the world. आप बैंक में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, अब एयरलाइन यस में जाते हैं तो मतलब अंग्रेजी बोलते हैं। यस आजकल अगर आप किसी के साथ यस इंटरेक्शन आज अगर करना आपको चाह रहे हैं आपने तो किसी वर्ल्ड एक्सप्लोर इंडियन करा। प्लेटफॉर्म पे, या तो अंग्रेजी के बगैर तो कोई वास्ता है ही नहीं। ठीक है ना? मेरा बस चले, हम तो शेर व शायरी करते रहे सारा एग्जैक्टली, यू दिन, आर लेकिन टोटली टोटली सुनने एग्रीड वाला कोई है विद यू। नहीं। आपका आपकी शेरो शायरी के सर काफी फैन है। आई आई मैंने देखा था, एक आपका वीडियो देखा था, यू शेयर्ड अ प्लेटफॉर्म विद संजीव कपूर सर एज वेल। तो वो मोमेंट सर मतलब एक एक शायद मुझे लगता है एक ट्रेनी के लिए जो आज आप सर के साथ भी प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, एंड यू हैव लाइक होस्टेड अ लॉट अवार्ड शोज एज हाँ, वेल। तो उसमें भी आज के अब टाइम पे अगर देखा जाए, यू तो आर द शौक, लाइक। हाँ, अब सबका शौक होता है, पर कईयों को it's a hobby and a passion with me. I mean, I enjoy the craft. I am not. It's not. I was not born with Urdu in my genes. I'm a Punjabi Khatri, and we don't. Although we speak a little bit of Urdu, Punjabi, Hindi in the house, but I learnt it and I enjoyed it, and today I speak with fluency. I'm not. I don't go to mushairas and all that, but I use the idiom or the medium to express myself. Okay? तो उसी पे मैं एक इंडियन, हमारे ग्रेट। हिंदुस्तान खानी पे एक बहुत अच्छा कपलेट है, आपके दर्शकों को वो मैं सुनाता हूँ। उसमें ये उन्होंने कहा है, बहुत पुराने, हमने नहीं लिखा, ये यस। बहुत बड़े शायर होते थे, उन्होंने हिंदुस्तानी खाने पे लिखा है कि उसने कहा है कि जिसकी खुशबू से भी उठ जाए फिजा, मतलब खुशबू, फ्रेग्रेंस, जिसकी खुशबू से भी उठ जाए फिजा, जिसकी रंगत से भी आ जाए मजा, वो नफीस और लजीज है लुकमा, मतलब कि हर मॉर्शल जो गराई खाते हैं वो लजीज भी है, नफीस भी है, जिसका जायका हो एक दूजे से जफा। वी आर डिफ्रेंशिएटेड पीपल, चिराग और है, गौतम और है, तो जिसका जायका हो एक दूजे से जुदा। जब आप खाना खाएं, और जो अनलर्नड कुक्स होते हैं उनका खाना एक जैसा होता है, अगर आप सीखेंगे तो हर खाने का जायका अलग होगा, ये तो आपने, तभी तो मजा है मुझे लगता है हिंदुस्तानी कि खाने। और जिसे खा के ना खुश हो जाए बहुत, मैं। दिस इज समथिंग। यस, दिस इज समथिंग आपने बहुत बहुत एक बहुत बिग लेसन एक छोटे से आपने फ्रेज में आपने काउंट डाउन कर दिया उस चीज को। मतलब रियली ग्रेट। एंड यही तो चीज सर आपकी मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट एंड आपको इग्नाइट करती है कि जो आप जो मतलब सेंटेंसेस में इतने बड़े बड़े लेसन दे जाते हो, शायद कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे, बट आपने जो उसको फ्रेम किया, दैट इज सो नाइस ऑफ दैट। चलिए, थैंक मतलब यू वेरी मच आई फॉर डोंट हैविंग थिंक मी, सो, एंड मतलब होपफुली we'll get together again. यस। Okay? यस। At your convenience. I wish you all the best, यस। Chirag, यस and I डेफिनेटली wish सर। your यस। listeners all the well. And please keep in touch. You're an inspiration. You're a bright young यस। man. I एंड like your spirit, and God willing, you will see that life is good. Okay? यस, एंड आई जस्ट आई वांट कि आप एक मिनट के लिए कंक्लूड कर दें फॉर द यंगस्टर्स एंड फॉर होल फैमिली ऑफ दिस पॉडकास्ट की लाइक कि वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर जर्नी, एंड हाउ टू बी मोर क्लियर अबाउट द नीश दे आर इन। मतलब कैसे वो और Uh, क्लियर हो सकते हैं अपनी नीश में। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं वेदर व्हाट टू चूज व्हाट नॉट टू। तो एक आप व्हाट व्हाट टेक अवे फ्रॉम दिस होल पॉडकास्ट। Well, I think what is important is, first of all, I think mentorship is very important, Chirag. If you don't have a mentor, get a mentor. Okay. Uh, and, there are a lot of mentorship programs available in this country. Please listen. That's the important thing. Ask your brother, your cousin, someone in the family to guide you.
I'm very happy to mentor people. If you want, you can tell your people that I'm available for mentorship. Rationalize that, and you have to do. Eventually, it's all about ABC analysis. Uh, ABC analysis तो आप जानते ही हैं कि भाई वो एबीसी एनालिसिस का Yes. आउटकम अगर वो 80-20 होगा देन यू नो दैट यू हिट द राइट स्पॉट. जो 80% है वही आप करना चाहते हैं. तो तीन आपको मैंने चीजें सिखाई थी. मैंने कहा एक तो आपका प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी. इसमें आपका बाइफिकेशन कीजिए भी आपको किस में दिलचस्पी है. आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं, आप प्रोसेसेस के साथ काम करना चाहते हैं, या आप प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहते हैं. तो अगर आप इसको क्लैरिटी से ABSC एनालिसिस देंगे तो आपकी जो रेटिंग है द आउटकम होगा. फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू वर्क इन अ होटल और इंश्योरेंस, और यू वांट टू बी एन इंजीनियर, और यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. ऑलराइट, बट नथिंग विल कम फास्ट. ये स्टार्टअप्स जो होते हैं, ये कई लोग अब, a lot of people struggle. Okay, it's not as if there's a success story every day. Some people have hit it big, some people, but it takes time and patience and diligence. And let me tell you, they don't cry about time. वो they are not whining कि हमको 12 घंटे काम करने पड़ते हैं. चौड़ा वो जो जिसने भी काम किया है, जितने भी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं दुनिया में, they put a lot of time and practice into their craft. Okay, so if you don't have a mentor, get one. If you don't have an ABC analysis, make one. If you don't have what I call the quadrant, the product, people, process, technology quadrant बनाइए, and you'll find that the answers come. And then ask your heart and combine it with your mind. कि भी कहाँ और क्या करना चाहती हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ मैं, And the answers will come to you. And eventually, एक गुरु, कोई किसी को गुरु बनाइए, और इसमें ईगो की बात नहीं होती. I totally agree with you, sir. मतलब when I know, मतलब मैं remember करता हूँ वो दिन जब in lockdown when I called you and आपने I thought कि मतलब दीवान सर मुझे उसके बारे में गाइड कर सकें. जब से मैंने शायद आपको कॉल किया था, वो पर्सपेक्टिव जो आपने चेंज किया माइंड का, that was a shift in the journey, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट होता है, तब से I started doing this all stuffs, and a big thank to you and your मतलब जब भी शायद सर को याद किया तो he is the one जो वहां पर he is the one with who is standing with me. So काफी अच्छा लगता है सर आपके साथ रह के आपसे Thank you, Chirag. Thank you very much again. You're a very, very special boy. Yes. Thank you, namaskar, and Jai Hind. Thank you Bye-bye. so much. Thank you.